केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने लड़की की कथित जासूसी पर मोदी और बीजेपी को आज फिर घेरा है। तिवारी ने ट्विटर पर लिखा है, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। मनीष तिवारी ने और ट्विटर पर लिखा है कि लड़की को सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं दिया गया। मनीष तिवारी ने मोदी को साहेबजादा कहा। And they are saying that they were providing security to that woman in this snooping case. If the Bharatiya Janata Party's explanation is to be believed, that on the request of the father they were providing security to the lady in question, then would they mind elaborating as to was any threat assessment carried out? Was and if a threat assessment was carried out, then the legal and the dignified way of doing it would have been to provide personal security officers, which is the norm. Why did the Bharatiya Janata Party court the ignominy of becoming the Stalking Sahebzada? The entire explanation of the Bharatiya Janata Party does not add up. It does not wash. And they need to come clean on this. They need to tell the nation as to whether this was the only isolated case in which surreptitious surveillance was allegedly mounted, or this has been the sine qua non in Gujarat and the other Bharatiya Janata Party ruled states. So therefore, if you look at the explanation in totality, it does not under any circumstances add up or provide a logical, cogent and a clear explanation. In fact, it only serves to reinforce the nomenclature which they have unwittingly earned of being the Stalking Sahebzadas. Sir, but they're saying Congress has no stake in this because either the father or the husband or somebody related to her should come forward and take. Why Congress is coming? Well, I think the nation has a stake in it. If innocent civilians are being tailed, surveillance is being mounted in the name of providing security, it is a clear breach of the right to privacy guaranteed under Article 21. I would like to ask the women and the mothers and daughters of this country, would you feel safe and secure in a society where you are tailed surreptitiously by the secret police of the state? I would like to ask the men of this country, would you feel secure if your wives, mothers and daughters were similarly put to surveillance by the state apparatus? So therefore, this is a very clear case of breach of not only constitutional propriety, but breach of all canons of civilized behavior. This is not the manner in which a state ought to behave. And to top all that, they come out with all these self-serving explanations which do not wash at all. Manish ji, you are in the center. And what will be your course of action? Well, BJP has rejected any Supreme Court inquiry or anything. Will you be taking a suo moto stand? Will the government be taking any step? Well, the party has demanded an inquiry by a retired or a sitting Supreme Court judge. So therefore, if the party has articulated this demand, obviously the government would consider it. And I think at an appropriate level, the Home Minister or the person tasked with this remit in government would respond. So, another question, sir. Eminent scientist who is now conferred to be Bharat Ratna, he has said that government is not providing adequate money and adequate compensation to scientists for research. And in fact, he's used a word called idiot for politicians. How do you look at it, sir? Well, I think I would discount the irascibleness which may have been intrinsic to his reply at that particular point in time, and to the point that whether we are serving enough on science or not, I think there is always a case where on research and development, on science, the outlays can always be enhanced, because after all, the scientific community has done us proud, and that is why the government went out of its way that in addition to a sportsperson of eminence. सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने हमला बोला मोदी पर और बीजेपी पर। आपको बता दें, जासूसी विवाद में जेडीयू ने नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराएं, जब तक जांच हो मोदी जी इस्तीफा दें। और जैसे फोन टेपिंग में रामकृष्ण हेगड़े जी, उनका इस्तीफा हुआ था, ये पीएम के उम्मीदवार हैं, इनका तब तक के लिए इस्तीफा होना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा विवाद है क्या। शुक्रवार को वेब पोर्टल कोबरा पोस्ट ने एक सीडी जारी की थी जिसमें अमित शाह और गुजरात एटीएस के तत्कालीन एसपी जीएल सिंघल की बातचीत का दावा किया गया है। इसी सीडी में किसी साहेब के कहने पर लड़की की जासूसी का जिक्र है। सीडी के आधार पर कांग्रेस ने कहा है कि अमित शाह और सिंघल के बीच बातचीत में जिस साहेब का जिक्र है वो नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी साहेब पर मोदी के बचाव में आ गई है। ये एक महिला के रूप में अनेक महिलाओं का प्रश्न है कि प्राइवेसी के ऊपर इस तरह का अटैक क्यों। अब साहब और कोई नहीं, सिर्फ हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की महिला नेताओं ने सिर्फ नरेंद्र मोदी पर जासूसी का आरोप लगाने को लेकर निशाना ही नहीं साधा, बल्कि सीडी कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग भी कर दी। State sponsored stalking is synonymous with the state intruding into your bedroom. It raises very serious questions about the infringement of civil liberties. कांग्रेस कह रही है कि सीडी के मुताबिक जिस साहेब के कहने पर लड़की की जासूसी करवाई गई वो कोई और नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन मोदी के बचाव में उतरी बीजेपी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। प्राइवेट मैटर है जिसके अंदर जिस लड़की की इज्जत बचाने का पक्ष है, उस लड़की के पिता कुछ कह रहे हैं, लड़की कुछ कह रही है। कांग्रेस पार्टी होती कौन है? कौन है कांग्रेस पार्टी? बाप है, भाई है, माँ है, कौन है? कोबरा पोस्ट और गुलेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सीडी जारी की। सीडी के मुताबिक साल 2009 में एक लड़की की निगरानी की गई। निगरानी कर रहे थे एटीएस के उस वक्त के एसपी जीएल सिंघल और इनको आदेश दे रहे थे तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह। दावे के मुताबिक अमित शाह को भी किसी साहिब से आदेश मिल रहे थे। And to me, this whole story is about how this woman, the way she was being surveilled across wherever she went, to hotels, gyms, hospitals, visiting her relatives, friends, and the 24-hour sort of phone tapping on her and physical surveillance. Innocent woman who was not a terrorist, who was not a criminal, clearly abusing and overreaching their powers. And surveilling this woman. आरोप लगे तो लड़की के पिता ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने ही अपने पारिवारिक मित्र और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बेटी की देखभाल के लिए कहा था। और सवाल यही कि साहेब पर क्या बीजेपी का बचाव जायज है?